All right. So I talked about the rectangular lamina and the moment of inertia of the rectangular lamina with respect to x-axis, and gave you the y-axis. No, sorry, with respect to the y-axis, and I gave you ix as the homework. So let us continue from there. So today we will talk about the rectangular lamina. We'll talk about the rectangular slab. We'll talk about disc. We'll talk about cylinder. We'll talk about sphere. So however much time permits us, अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ axis, we will discuss what is the moment of inertia and how we can calculate them, okay, not just remember them. ठीक है, यहाँ पे आप for the first time and probably for the last time you are going to calculate the moment of inertia of various objects. For the rest of जब तक आप भी मैकेनिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स देते रहेंगे, you will need to remember those things. So therefore it's very important that we derive these quantities in a proper logical fashion so that it makes sense to you. Let me borrow the rectangular lamina from there. So today we'll talk about moment of inertia of 2D and 3D objects. So we'll talk about a rectangular sheet, we'll talk about rectangular slab, we'll talk about a ring, we'll talk about disc, we'll talk about cylinder, we'll talk about sphere, जहाँ तक भी time permits us, okay. So the first so this was the rectangular lamina, okay. Or sheet. The moment of inertia of a 2D object, here being the rectangular lamina or sheet, and I calculated that with respect to two axes, x-axis and y-axis, okay. So moment of inertia with respect to y-axis, y is equal to how much? ml square by 1 by 12 ml square. ml square. And moment of inertia with respect to x-axis is equal to how much? 1 by 12 mb square. 1 by 12 mb square. Okay, 1 by 12 mb square. Okay, this is important to note that with respect to the y-axis it is ml square because L is perpendicular to the axis of rotation, and with respect to x-axis it is mb square, b is perpendicular to the axis of rotation. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका रोटेशन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, देन द मास डिस्ट्रीब्यूशन विल कंट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जहाँ पे भी आपके एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है रोटेशन, द मास डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन टू द एंटायर सिस्टम. नाउ सो दीज वर टू ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स. या सर, इज एन डिफरेंस बिटवीन लैमिना एंड शीट? I don't exactly know. Is there? I think sir, lamina doesn't has width. And sheet lamina meaning क्या है? मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई specific difference है तो मुझे नहीं मालूम यार. A thin layer, plate और scale ऐसा लिखा हुआ है तो definition of lamina में thin plate. So what are you saying, that it does not have Width, sir, width. width? Acha, width. Okay, we are not assuming that this object has a width. It's a two-dimensional plane sheet or a lamina. I think it makes sense यार. For me it makes sense. अगर मेरा term थोड़ा सा गलत है तो I don't know. Thin plate लिखा है. लैमिना स्पेनिश में होता है, शीट इंग्लिश में होता है. लैमिना किस में होता है? स्पेनिश. अच्छा.
देखो जहाँ तक मैंने लैमिना यूज़ किया है, आई हैव यूज्ड इट एज अ 2D surface or 2D sheet, 2-dimensional planar closed surface which has a mass and a surface density. ठीक तो है. So the moment of inertia with respect to y-axis, moment of inertia with respect to x-axis. Now if I want to calculate the moment of inertia, let's suppose with respect to the z-axis, okay, with respect to the z-axis, let's suppose an axis perpendicular to the sheet. All right, so if I redraw this entire thing and I want to calculate the moment of inertia, let's suppose moment of inertia with respect के जगह पे मुझे लगता है ये बेटर रहेगा about x-axis, about y-axis and about z-axis. About z-axis, that is an axis perpendicular to the plane of a sheet or lamina and passing through the center of mass. Okay, यहाँ पे x and y axis are passing through center of mass. Okay, this is very important. If it is not passing through center of mass, this is not true. Okay, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर देंगे तो that is not going to be true. So this is a rectangular sheet and this is your x-axis and this is your y-axis. X-axis, y-axis, and this is the z-axis. Okay, can you calculate what is the moment of inertia with respect to the z-axis? Well, here we can use, yeah, what can we use here? We can use the Perpendicular axis theorem. yes, very good. We can use the perpendicular axis theorem, which simply says that यहाँ पे if x-axis is passing through the plane and also passing through the center of mass, and y-axis is passing through the plane and also passing through the center of mass, then the moment of inertia of this two-dimensional sheet with respect to an axis that is perpendicular to the sheet and passing through the center of mass and also through the center of intersection of x-axis and y-axis is equal to Iz is equal to Ix plus Iy. That means Iz is simply equal to 1 by 12 ml square plus 1 by 12 mb square. That's it. From here it is simple to calculate 1 by 12 ml square plus b square. This is your answer. All right. ठीक है, this is clear beta? Yes, sir. What if I say that calculate the moment of inertia of the rectangular lamina with respect to an axis that is lying on the plane but passing through one of its sides. Let's suppose with respect to its breadth. Okay, let's suppose this is whatever axis this is, axis of rotation. Okay, यहाँ पे था आपका axis of rotation was this. यहाँ पे with respect to the axis of rotation is this. So with respect to an axis, with respect to or about an axis lying on the plane of the sheet and passing through one of its sides, that is breadth, BREATH. Okay, this is B, this is L. Okay, so we can calculate this using which? Using the Parallel axis theorem. Parallel axis theorem. very good. We can use the parallel axis theorem.
So the parallel axis theorem simply tells us that if there is an axis which is on the plane and passing through the center of mass, let's suppose this is the center of mass of the system, then with respect to the center of mass, let me say that this is I cm and this is I. Okay, so we can use the parallel axis theorem, which tells us that the moment of inertia I, which is about an axis on the plane but passing through its breadth or through one of its sides, is equal to a moment of inertia with respect to parallel axis. So ICM and I axis of ICM and axis of I are parallel, but the second axis must pass through its center of mass plus whatever is the distance, md square. whatever is the mass, and whatever is the distance. So distance is L by 2. L by 2. L by 2. So this is equal to m d square, where d is equal to L upon 2. So this is equal to ICM plus m L by 2 square. All right, where ICM is what? ICM is the moment of inertia with respect to an axis lying on the plane and passing through the center of mass. So this is equal to 1 by 12 m L square, right? So this is equal to 1 by 12 m L square plus 1 by 4 m L square. This simply becomes 12. So ml square plus 3 ml square. So this becomes 4 upon 12 ml square, or I is equal to 1 upon 3 ml square. Yeah, so this is with respect to an axis lying on the plane and passing through one of its sides, which is the breadth. Okay, now if I change the question again, okay, this is point number 5. If I change the question again and I say that I want to calculate the moment of inertia with respect to this axis, okay, with respect to an axis passing through its length, ये कितना होगा? 1 by 3 mb square. 1 by 3 m by md square. This is obvious to everyone. इसको कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है? No sir. Yes, sir. No sir. No sir. No, sir. No, no. All right. So here, with respect about an axis lying on the plane and passing through the side or length, which is I is equal to, वैसे यहाँ पे भी हम छोटे पॉइंट में दिखा सकते हैं कि अगर आपका एक एक्सेस यहाँ पे होगा which is passing through the center of mass, okay, this is ICM, sorry, and this is I, then I is equal to ICM plus md square, where this is d. That's it, using perpendicular axis theorem, sorry, parallel axis theorem. So this simply becomes ICM is equal to 1 by 12 m b square plus md is equal to b upon 2 whole square. This comes out to be 1 upon 3 m b square. Okay. All right. So these are the various moments of inertia of a rectangular slab with respect to different axes. With respect to axis falling on the plane, with respect to axis passing through the center of mass, with respect to axis not passing through the center of mass. Okay, now let me give you a problem and you tell me what is going to be the answer here. Tell me what is going to be the moment of inertia of a slab with respect to an axis perpendicular to the plane but passing through one of the edges. Same rectangular slab having same dimensions. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लेंगे सर. निकाल के बताओ. About an axis. ओके सर. m l square plus b. About an axis perpendicular to the plane of the rectangle, perpendicular to the plane of the rectangular sheet,
and passing through one of its edges. कितना होगा? Sir, m/3 L square plus B square. Bracket. M 1 by by 3 L m square plus B square. m by Rather 3 than L L and B, square we'll plus use B under square. root of L square plus B square. अंडर रूट भी आ गया क्या इसमें? No, sir. Distance. नहीं sir, नहीं sir, under root कुछ नहीं. m by 3 bracket L square plus B square. Yes sir. हाँ नहीं तो यहाँ पे just आ सकता है. 2 minutes. यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए. एक सेकेंड. नहीं यहाँ पे तो आ सकता है ना, because it is on the edge. So okay, let's calculate. So अगर this is the center of mass and this is the IG with respect to the center of mass. Let's So suppose the this is distance will be under ICM. root of B square plus L by 2 whole हाँ square. आ जाएगा, इसमें आएगा. Sorry इसमें आ जाएगा. Okay. Yes, sir. So we can use parallel axis theorem. Parallel axis theorem क्या कहती है? That I with respect to an axis perpendicular to the plane passing through the edge is equal to ICM with respect to an axis perpendicular to the plane passing through the center of mass plus md square where this is d. Okay, तो यहाँ पे d और बाकी सब का रिलेशन क्या होगा? ये so this is basically a right angle triangle. Yes. So this is d, this is b upon 2 and this is l upon 2. Can you figure it out from the diagram? Yes, sir. So if I drop Yes sir. perpendiculars from the center of mass on both sides, and d basically represents the diagonal. Okay, d simply represents here the diagonal in this case. Okay, so if I drop perpendiculars, this is one perpendicular on one side, this is another perpendicular on another side, then d will simply give us an idea of this right angle triangle. Okay, it will give us an idea of this right angle triangle. So from this right angle triangle, I can simply use Pythagoras theorem to calculate what is the value of d. So the value of d here is d is equal to root over L by 2 square plus Yes, B by 2 b by 2 square. So this is equal to L square by 4, 1 by 2 L square plus B square. L square by 4 plus b square by 4. So this simply comes out to be 2 upon, so this is L square plus b square upon 4 root over, so this is equal to 1 by 2 root over L square plus b square. Okay, so here I can use, so ICM is what is ICM? ICM हमने यहाँ पे obtain किया था, the moment of inertia with respect to an axis which is perpendicular to the plane passing through the center of mass, है ना? This is ICM, 1 by 12 m L square plus b square. So this is 1 by 12 m L square plus b square. ये है ICM plus m. d तो यहाँ से मिल गया हमें, d यहाँ से मिल गया. So this is into d square is 1 by 4 into L square plus b square. So this is equal to 1 by 12 m L square plus b square plus 1 by 4 m L square plus b square. So this is equal to 1 by 12 plus 1 by 4 m L square plus b square. So this is equal to what? 3 plus 1, 4 by 12. 4 by 12 is 1 by 3. 1 by 3 m L square plus b square. ठीक है? This is the moment of inertia about an axis perpendicular to plane passing through the edge.
ओके गाइस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर ये आंसर तो वैसे भी आ रहा था ना, क्या चीज़? सर ये आंसर तो वैसे भी आ रहा था ना वैसे कैसे आ रहा था? सर, 1/3 ml स्क्वायर प्लस 1/3 mb स्क्वायर। अच्छा, Perpendicular axis विथ थे। रेस्पेक्ट टू दीज एक्सेस, इसकी बात कर रहे हो तुम? यस हाँ, Yes, sir. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, परफेक्टली ऑल राइट, ऐसे भी कर सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस प्लस विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस विल गिव यू विथ रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, परफेक्टली फाइन। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप जल्दी से इसको करके मुझे बताओ, मैं नहीं कर रहा। तो बेसिकली क्या है कि इफ़ आई गिव यू एनी काइंड ऑफ अ सरफेस और उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर आपको मालूम है कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप बाकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में टू अ सर्टेन एक्सटेंट निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, ये बताओ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस perpendicular to the plane passing through the center of its breadth. Okay, about an axis perpendicular to the plane but passing through the center of its breadth. What is the moment of inertia here? ml square by 3 plus mb square over 12. सबने obtain कर लिया? Let me see what the others find out. यस सर, यही आएगा, Yes, sir. ml स्क्वायर। Okay, sir. Okay. हाँ, इसका आंसर आएगा m/12 4l square plus b square, है ना? तो ml square by जी सर, 3 plus mb square upon 12. Yes, sir. ठीक है, तो आई कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे यू हैव द सेम रेक्टेंगुलर स्लैब बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट in all these situations. So the most interesting part is that for the same mass distribution, the moment of inertia can be very, very different depending upon which is the axis or what is the plane of the axis, because it all ultimately depends upon what is the contribution of inertia of that mass distribution towards a rotation with respect to a particular axis. तो axis कहाँ पे है, किस point के through pass हो रहा है, वो सब factors के ऊपर depend करता है. And if you know, let's suppose rectangular slab में अगर तुम्हें एक side अगर आपको जो है एक चीज़ मालूम है, तो आप बाकी सारा वहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ द अदर क्वांटिटीज आर वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट इफ यू जस्ट नो एटलीस्ट वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर एक्सिस. ठीक है, शैल वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? Yes, sir. यस सर। So just wait for 2 minutes. Sir. Sure, no problem. If there is any question that you would like to ask, you can ask, or write it in the chat also if you have any question. ये नोट डाउन कर लिया बेटा? कोई पार्ट दोबारा से Yes, दिखाने की yes, जरूरत sir. है? एक बार ऊपर वाला दिखा दे, second last part. Yes. This Yes, sir. portion. Okay. Yes, sir. So थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दे। ठीक है. So in the second last thing we did, the axis passing through the center of mass or perpendicular to that? Passing through the center of mass. Which number? 5 or 6? Second, 6. sixth one. Yes, sir. This is Passing an through the center. this is an axis passing through the center of mass. Yes. Actually, it's looking like perpendicular. No, it is perpendicular to the plane but still passing through the center of Yeah. mass. Yes. मतलब ये है ना, ये शीट है ऐसे जा रहा है ना, Yes, sir. Yes. ना कि ऐसे जा रहा है. ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आई थिंक सबने.
Yes, sir. Okay, so ठीक let's move ahead to the next problem, which is that of a rectangular slab. So here we talked about a rectangular sheet of almost near zero thickness. Next we're going to talk about a rectangular slab of having some finite thickness. To a certain extent, your this thing क्या बोलते हैं, some of the moments of inertia values are going to be same, but we need to prove that in fact how the thickness affects this thing, moment of inertia for a rectangular slab. Okay. Just give me a moment. Okay, so let me draw the diagram for this.
Okay. Is it making any sense? This looks like a rectangular slab, no? Yes, sir, it's fine. Yes. Yes, sir. ठीक है. So let's suppose this is x, this is y, and this is z, and this length is L. This is breadth, and this is T. Thickness is T. Okay. Length L. ब्रेथ का स्पेलिंग क्या होता है? BREADTH ना? Yes, sir. Yes, sir. BREADTH. Yes, sir. BREADTH. B. And thickness T. Okay. Let's suppose mass M and uniform mass density. Rho is equal to m upon v, where v is equal to LBT. Okay, LBT. Okay. So now I want to calculate the moment of inertia of this kind of a rectangular slab, but with respect to different axes. With respect to x-axis क्या होगा, with respect to y-axis क्या होगा, with respect to z-axis क्या होगा. Let's suppose that the center of intersection of all of these axes is the same as the center of mass. O lies at the center of mass. Okay, so all of these axes are passing through the center of mass. X-axis and y-axis are on the plane of the slab, and z-axis is perpendicular to the thickness. Okay, so this is how I have defined the problem. Okay, fine. So this is how I define the problem. So now what we can do is we know what is the moment of inertia of a rectangular lamina or rectangular sheet. We can use that to calculate the moment of inertia of a small cross section of the slab, and then we can integrate for all the infinite number of sheets possible. So for example, if I take a small cross section here, like if I make a small cut, okay, if I make an extremely small cut here so that the thickness is near about 0, then I can consider that this is some kind of a rectangular sheet. सर तो इस वाले में रेगुलर थिकनेस को आप ब्रेथ को दिखा रहे हैं. Pardon? सर इससे तो सेम ही है, बट आप लेंथ तो ब्रेथ को डिक्रीज, हम लोग पीस स्लाइसेस नहीं पड़ेंगे ना, जैसे स्लाइस जैसे ब्रेथ से वैसे काटना पड़ेगा तौर पे. आपका ऑडियो बहुत ही टूट के आ रहा है. कैन यू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली? आई एम नॉट हियरिंग इट एक्चुअली. ओके, क्या तो ऐसे भाई चैट बॉक्स में लिख दे. I am not hearing it. Anybody else is hearing it? What is asking? Swapnil is asking. नो सर. स्लाइस कर रहा है. Yes, sir. I think he was speaking like we have to slice that for finding the moment of Yeah, inertia, I'm I guess. taking a small slice, or I'm taking a small cross section by cutting it at this particular position. Okay, so यहाँ पे मैंने एक छोटा सा knife लेकर के I cut it into a small, extremely small slice, and the slice is at a distance of, y. इसका distance क्या है? Y है, and इसकी जो thickness है, let's suppose the thickness is dy. Okay, और इसका जो length है, that is equal to b. The length is equal to b. Okay, so what I'm going to do is to calculate the moment of inertia of this three-dimensional slab. I'm going to take a small cross section of the slab
and that small cross section of the slab will look like some kind of a rectangular sheet, and I can say that what is the moment of inertia of that rectangular sheet, and then from there on I can integrate forwards. For example, if I calculate, let's suppose, the moment of inertia with respect to an axis passing through this cross section, now can you tell me what is going to be the moment of inertia? Let's suppose ये जो small slice है, small slice has mass dm. So can you tell me what is the moment of inertia of, let's suppose, इसको मैं मानता हूँ I dash. What is I dash? What is I dash if the mass is dm? 1/12 dm b square. Very good. So I dash is simply equal to 1/12, mass is dm, and the distance is b square. This is clear to everyone? Yes, sir. Yes. This is clear to everyone? Yes, sir. So the moment of inertia, this is the moment of inertia of small cross section of the slab. हेलो सर, Yes, सर ये आपने अभी बताया, ये एक बार और बता दो, मेरा सिग्नल चला गया था। बता रहा हूँ. With respect to axis passing through center of rectangle, rectangle cross section. Okay, so let me repeat it once more. We are trying to find the moment of inertia of a 3D object. First of all, a rectangular slab. A rectangular slab has 3 dimensions: length, breadth and thickness. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया. आई टुक अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन हियर. ओके, ये जो क्रॉस सेक्शन है मैंने यहाँ पे कट कर दिया इस पर्टिकुलर प्लेन में. आई कट इट थ्रू. आई टुक अ शार्प नाइफ एंड आई कट इट थ्रू, एंड द मोमेंट आई कट इट थ्रू आई एंड अप गेटिंग दिस पर्टिकुलर small cross section which is a rectangle. Yes, अगर इसका thickness बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा तो it is just a rectangular sheet. It is just a rectangular sheet. Okay, having dimensions of b and t. Okay, having dimensions of b and t, because इसका thickness बहुत ही ज़्यादा छोटा है, so I am not considering that at all. So extremely small thickness having dimensions b and t. तो इसका जो moment of inertia होगा with respect to an axis which is lying on this rectangular sheet passing through the center of mass, यहाँ से pass हो रहा है, and parallel to the thickness t and perpendicular to the breadth b is equal to nothing but 1/12. The mass is dm and the perpendicular length is b, 1/12 dm b square. ठीक है, this is clear guys? Yes, sir. Okay, now what is the moment of inertia of a rectangular slice or cross section with respect to z axis? ठीक है, पहले हमने आई डैश के टर्म्स पे ले लिया, अब z के टर्म्स पे लेंगे. हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. So if I apply parallel axis theorem, from here I can say that the moment of inertia with respect to the z axis is equal to the moment of inertia I dash plus the mass of the rectangular slice multiplied by y square. Y square. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या तो पूछ सकते हो. Whatever I have No, done. sir. सर Yes. सर ये इतना स्लाइसिंग करने से अच्छा है पॉइंट मास लेकर के और मल्टीपल इंटीग्रल लगा सकते हैं क्या? हाँ, ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा, कर सकते हैं.
लेकिन इसमें कोई ऐसा बेटर या वो नहीं, इट्स अप टू यू, अप टू यू राइट नाउ। यहाँ तक जो है तुम्हें शायद लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट द फॉलोइंग स्टेप्स आर वेरी इजी। इट्स अ सिंगल इंटीग्रल। आप अगर एक पॉइंट मास लेंगे तो फिर आपको एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो वो भी इतना कुछ आसान नहीं है। दैट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन मेरिट्स डीमेरिट्स, तो कुछ नहीं है, आपका चॉइस है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू वांट टू डू। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए आप इसको 2D सर्फेसेस में अप्रॉक्सीमेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर 1D एलिमेंट्स में अप्रॉक्सीमेट करके ट्रिपल इंटीग्रेशन कर सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, ठीक है। आई एम डूइंग इट इन दिस फैशन। So if you take a small rectangular slice out of this entire box, find out the moment of inertia with respect to an axis parallel to its plane and parallel to z axis, and then again find out its moment of inertia with respect to the z axis, then this is what it becomes. Okay. Now, so therefore this simply becomes Iz is I1 upon 12 dm b square plus dm y square. So this becomes what? This becomes 1 upon 12 b square plus y square dm. Now it's time to find out what dm is. Okay, if it is uniform mass density, if the entire object has uniform mass density, then I can say that the uniform mass density rho is equal to m upon v is equal to m upon l b t. Now I can also say that if it is uniform, that rho is equal to dm upon the volume of this particular rectangular sheet that I have taken out as a cross section. dybl. Okay, so this is nothing but dm upon bt dy. Yes. Yes. So this is nothing but dm is equal to rho into bt dy. So this is equal to m upon lbt bt dy. So this becomes dm is equal to b gets cancelled, t gets cancelled, it simply becomes m upon l dy. That's it. This is what it becomes. So dm is nothing but m upon l dy, which I can use here. If I use it here, it simply becomes 1 upon 12 b square plus y square into m upon l dy. Now I have an expression that I can integrate because the dy के terms पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं imagine कर सकता हूँ that this entire sheet corresponds to a large number of infinite rectangular cross sections. So I can integrate from minus l to plus l, ठीक है। Let's suppose there are an infinite number of rectangular cross sections that ends up creating this slab in the first place, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। Let's suppose that there are, sorry, so I can suppose that this rectangular slab so I know the moment of inertia of one particular rectangular cross section with respect to an axis perpendicular to this plane passing through the center of mass. Now I can integrate it over an infinite number of rectangular cross sections that make up this rectangular slab in the first place, ठीक है। So I can imagine that this rectangular slab is being created by a combination of large number of rectangular sheets, one on top of another, and then I can integrate it over minus L by 2 to plus L by 2. That's it. So let's suppose, okay, this is the let's suppose diz, okay, moment of inertia of rectangular slice cross section on z axis, ठीक है। So the moment of inertia of the entire rectangular slab is simply integration over diz. That's it.
सर 1/12 बाहर है, दोनों से कॉमन है। 1/12 बाहर कैसे आएगा? 1/12 बाहर थोड़ी है। हाँ सॉरी नहीं सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट बाय कंबाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ 2D प्लेन्स। इट्स लाइक आप अगर एक छोटा सा बैंडेड लेते, उसके ऊपर दूसरा लगाते, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे, पांचवा लगाएंगे, तो यू एंड अप गेटिंग अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, इफ़ यू टेक अ स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल रेक्टेंगुलर स्लिप, उसके ऊपर आप दूसरा स्ट्रिप रख देंगे, उसके ऊपर एक तीसरा स्ट्रिप रख देंगे, उसके ऊपर एक चौथा रख देंगे, तो you will finally end up getting some kind of a 3-dimensional rectangular body from 2-dimensional strips. So therefore now I can integrate dz. So this simply becomes integration from minus L by 2 to plus L by 2 of 1 upon 12 b square plus y square m upon L dy. That's it. यहाँ तक ही बस थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, वहाँ पे फर्दर कैलकुलेशंस बहुत ईजी है, इंटीग्रेशंस आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ तक आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है दैट हाउ यू कैन create the rectangular slab by a large number of small rectangular cross sections, and you find out the moment of inertia of one rectangular cross section with respect to the z-axis, and then you can find out the moment of inertia of the entire rectangular slab by integrating that with respect to the variable here which is dy. ठीक है, वो करके देखते हैं. So this is nothing but integration from minus L by 2 to plus L by 2. This is equal to m upon 12 L b square dy plus minus L by 2 to plus L by 2. Just give me 1 second. Alright, there is something going on outside. So m b square upon 12L dy plus m upon L y square dy. Just that's it. Solve the integration, you should get the answer. So this becomes m b square upon 12L. So this is y from minus L by 2 to plus L by 2 plus m by L y cube by 3. From minus L by 2 to plus L by 2. So this simply becomes mb square upon 12L L by 2 minus L by 2 plus m by 3L. This becomes L by 2 cube minus L by 2 cube is equal to mb square upon 12L. So this is L by 2 plus L by 2 is just L, okay, plus m by 3L. So this becomes L cube by 8 plus so 2L cube upon 8. तो यहाँ पे आपका L gets cancelled, यहाँ पे L becomes square and 2 becomes 4. So this is nothing but 1 by 12 mb square L square plus B square. plus 1 by 12 ml square. So this moment of inertia of Iz is equal to 1 by 12 m L square plus B square. That's it. Now I think this expression is even easier to remember because it correlates directly with our previous moment of inertia of a rectangular cross section. ठीक है, तो ये cross section में हम 1 by yes सर जैसे आपने इसको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया है, हम इसको रेक्टेंगुलर सीटी मान लें लेमिना, जिसका मास डीएम हो जाए. हाँ वही तो मैंने किया है. नहीं सर, जैसे आपने इसको ये क्या है वाई, सर ऊपर देखो, ड्राइंग पे ले जाओ एक बार. तो सर जैसे आपने इसको ये जो डीवाई वाला माना है, हमें इसकी जगह फ्लैट हॉरिजॉन्टल ले लें एक सीट. वही मैंने माना, dy इज वेरी वेरी स्मॉल. नहीं सर, जैसे आपने ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ली है ना ये स्ट्रिप, हाँ
हम एक वाई एक्सिस के अलोंग ले लें एक स्ट्रिप। वो भी चल जाएगा। सर वो जैसे 2-3 लाइन में हो जाएगा, तो वो हम कैसे करें? जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए आप वाले तरीके से या फिर वैसे? दोनों तो सेम है ना, आप वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लो या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लो, आपको वही सेम चीज़ करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि नो मेरा सर, वो बोल रहा है हाँ एक्स वाई प्लेन में एक स्मॉल एलिमेंट ले हाँ लें। सर। हाँ वो भी कर सकते हो। एक्स वाई प्लेन में आप, अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि हम ये कैलकुलेट करें पहले और फिर उसको इंटीग्रेट करें। तो फिर सर डीएम का सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, वो एम हो जाएगा डीएम को। आप करके देख लो, उसमें ये पार्ट आपका स्किप हो जाएगा, बाकी सेम फर्दर पार्ट सेम ही रहेगा, वो भी आप कर सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द सेम थिंग। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक यहाँ पे ये स्लैब लिया है, ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फिर बाद में इसको ऐड अप करके रेक्टेंगल बना दिया। सर तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये समझे कि चाहे जितना मोटा मतलब थिक रेक्टेंगुलर स्लैब हो, उसका थिकनेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। विथ रेस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल में जो डिमेंशन है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जब यहाँ पे मैंने जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये फाइंड आउट किया था, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन जो है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन। यस सर। सर मैं वही बोल रहा था कि वहाँ एम की जगह हम डीएम कर दें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें। हाँ तो ठीक है, वैसे कर सकते हो, ठीक है, मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। इनफैक्ट ये तो याद रखने के लिए भी आसान हो गया एक तरीके से। अगर आप एक शीट का फाइंड आउट कर रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, और अगर आप स्लैब का फाइंड आउट कर रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। दिस इज ऑल्सो 1/12 ml² प्लस b², दिस इज ऑल्सो 1/12 ml² प्लस b²। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, वेरी मच परफेक्ट। यू कैन टेक अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड देन डू ए ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑल्सो। इन ऑल सिनेरियोज यू विल कम अप विद द सेम आंसर, ठीक है, दिस इज ओके। इफ यू फॉलो डिफरेंट मेथड आई हैव नो प्रॉब्लम, ओके, एग्जाम में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो सर। यस सर आपने यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है, हाँ हाँ, वहाँ पे थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? आपने सेंटर ऑफ मास ओ पे माना है, पॉइंट ओ पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब इज एट पॉइंट ओ, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज समवेयर हियर ना। O is the center of mass of the rectangular slab. सर तो मतलब ये होना चाहिए ना, आई डैश इक्वल टू डी आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर। फिर से बताना यार, तुम लोग थोड़ा क्लियरली बोलो, मुझे सुना ही नहीं देता क्या कह रहे हो। सर मतलब जो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जाती है, हाँ हाँ, तो सर वो यहाँ पे लिखी जाती है ना आईसीएम की जगह, अपने आईसीएम की जगह कुछ आई डैश लिख दिया है। ये दोनों सेम चीज़ नहीं है बेटा। जो यहाँ पे क्या है, मैं सिंपली एक क्या फ़र्क पड़ता है यार, आई मीन लाइक व्हाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस छोटा छोटा थिंग। ये तो समझ ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर शीट का फाइंड आउट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस बाय फाइंडिंग आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो इसको मैंने आई डैश बोल दिया इंस्टेड ऑफ आईसीएम। आईसीएम में नहीं बोलूँगा क्योंकि आईसीएम बोलते ही
कन्फ्यूजन एक और तुम्हें ही क्रिएट होगा कि आईसीएम शीट का है या स्लैब का है, दोनों सेम नहीं है ना। शीट का आईसीएम यहाँ पे है लेकिन स्लैब का आईसीएम तो यहाँ पे है ना, स्लैब का सॉरी है, ओके सर। फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। स्लैब का सेंटर ऑफ मास इज हियर, शीट का सेंटर ऑफ मास इज हियर, लेट्स सपोज ओ डैश, है ना। शीट का कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम। ओके सर ओके। All right, let's move ahead here. Let's move ahead and figure out a couple of other problems. Okay, so सबसे पहले तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्स, सबसे पहले ठीक है ओके। अभी यहाँ पे याद रखने के लिए कुछ चीज़ें इजी हो गई। अबाउट जेड एक्सिस, ये आपका तो ये आपका हो गया z एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया थिकनेस t, ये आपका हो गया, मैंने डिफाइन किया था b एंड l, दिस इज़ ब्रेथ b एंड दिस इज़ लेंथ l। अब तो मुझे लगता है ये देख के ही आप बता सकते हो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू 1/12 m l square plus b square. Now due to symmetry, can you also calculate the moment of inertia about y-axis? Yes, sir. What will be moment of inertia with respect to y-axis? 1/12 m b square plus t square. B square plus t square. And what is the moment of inertia about x-axis? 1/12 m l square plus t. L square plus T. This is clear to everyone. Due to symmetry of the system, I can use the same expression for all these three axes respectively. इसको भी मैं derive कर सकता हूँ, but no need because the rectangular slab has a certain amount of symmetry with respect to all these axes in terms of its shape. तो z axis के टर्म पे, z axis के पॉइंट पे, z axis is parallel to thickness t, तो t is not present here। इसको याद रखने का तरीका है ना। y axis is parallel to l, so l is not present L. here, है ना। x axis is parallel to b, so b is not present here। दिख रहा है, जो भी dimension के parallel है, that dimension is not present in the expression. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. So now if I want you to calculate the moment of inertia with respect to an axis passing through its vertex or edge parallel to the length and breadth plane, ये कितना होगा?
कैलकुलेट करके बताओ मुझे। वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, वेरी गुड। I z plus m d square, where d is this is d. Okay, again d को calculate करने के लिए you look at the right angle triangle. d is equal to b by 2 and l by 2. सर बस आपने क्वेश्चन में कहा था अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, तो ये तो पैरेलल है ना? हाँ सॉरी पैरेलल, perpendicular to plane, parallel to z axis, parallel to z axis, perpendicular to the LB plane, okay, the larger plane. So this is L square by 4 plus B square by 4. So this is equal to 1 by 2 root over L square plus B square. So this is equal to IZ. IZ is equal to 1 by 12 M L square plus B square plus M into 1 by 4 L square plus B square. So this becomes 1 by 3 M L square plus B square. So this is your answer here. Alright, अगर मैं आपको एक्सिस पर जब आपने परपेंडिकुलर बोला था तो हम लोग उसको एक्स एक्सिस पे निकाल के फिर उसके भी परपेंडिकुलर से थ्योरम लगा के तब निकालेंगे ना? परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होगा तो फिर ये एक्सिस हो जाएगा आपका, ये एक्सिस हो जाएगा। ये समझ रहे हो आप? ये सही समझ रहे हैं तो, लेकिन ये तो स्ट्रेट भी हो सकता है ना? आप इसको टेंजेंट के फॉर्म में थोड़ा सा टेढ़ा बना रहे हैं, बट हम लोग इसको हाँ, एक सेकंड। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, बेस्ट दैट विल बी बेस्ट। ये एक्सिस हो गया आपका। यस सर। तो ये फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा। आई yes, वाई sir, y निकाल के के फिर उसका पैरेलल निकाल देंगे। हाँ, सेम वे आप बाकी सारे एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं, ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं आप, ये भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सर जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो वो 3D ऑब्जेक्ट में थोड़ी लगा सकते हैं, 3D वाला नहीं लगाएंगे। वो तो परपेंडिकुलर हो गया ना, पैरेलल थोड़ी होगा। तो वो कहाँ लगाए मैंने, वो तो लगाए नहीं, वो लगाए मैंने, वो तो नहीं लगाया। 3D एक्सिस में तब लगा सकते हो व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री इन्वॉल्व्ड। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर डायगोनल के थ्रू एक्सिस को पास करूंगा तो वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो क्या तुम? वो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी ना z के थ्रू। मैं अगर एक डायगोनल के थ्रू एक्सिस को पास करता हूँ, कैन यू कैलकुलेट दैट? और ये सर सेंटर ऑफ मास से भी पास होगा? हाँ, डायगोनल तो सेंटर ऑफ मास से पास होता है ना। सर 2 मिनट्स रुक जाओ, चेक। ये सर z एक्सिस का है, उसमें फिर परपेंडिकुलर निकालेंगे जहाँ तक z एक्सिस के परपेंडिकुलर। अच्छा सर ये बॉडी डायगोनल है मतलब? बॉडी डायगोनल है। ओके सर। ये आप नहीं निकाल पाओगे। कैन एनीबडी टेल? जो अभी हमने अभी आई निकाला है दिस और नहीं, प्लस z एक्सिस। for let's make it a little bit simpler. Let's forget that this is a slab. Let's think of this as a rectangular slice. If I say calculate the moment of inertia with respect to this axis, can you do it? Anybody can do it? यस सर। कैसे करोगे बताओ? सर हम इसको वो मान सकते हैं ना कि एक ऊपर ट्रायंगुलर शीट है और एक नीचे, तो उसका mh स्क्वायर बाय 6 होता है, हमें पता है, फिर दोनों को ऐड करके आ जाएगा।
ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में कर सकते हो आप, नॉट फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट। सर ये ट्राई करना पड़ेगा। इसको ट्राई करना फिर, ठीक है। मुझे लगता है ये आप नहीं कर पाओगे, बट अगर करते हो तो अच्छी बात है। यस सर। ट्राई सबके लिए, ठीक ओके है। सर। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप रेक्टेंगुलर स्लैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप अभी कर पाओगे, वेदर इट इज़ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to one of its perpendicular to the plane containing L and B, or perpendicular to plane containing B and T, or perpendicular to the plane containing L and T, or whether it's an axis passing through the edge or one of its sides, you can calculate that, ठीक है। डायगोनल का आप एक बार ट्राई करना। लेट अस मूव अहेड टू अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबका, कोई डाउट है किसी को? यस नो सर। राइट, नो सर। let us move ahead to the next problem, which is ring. Okay, ring. What is the moment of inertia of a ring? mr²। मैंने एक्सिस तो डिफाइन ही नहीं किया, कैसे बोल सकते हैं mr² है? एक्सिस मैंने बोला अभी यस तक? सर, सही बात बिना है। एक्सिस के कैसे बोल सकते हो? हाँ, बिना एक्सिस के तो बोल ही नहीं सकते यार। जनरली हम सेंटर ऑफ मास से ही Gen- करते हैं जो परपेंडिकुलर हो प्लेन के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना एक्सिस के तुम कैसे बोल सकते हो कि mr² है? नहीं बोल सकते, यस सर, सॉरी सर। है ना। देख के बोल सकते हैं, सही बोला है। हाँ, वो हम डिफाइन ही करना पड़ेगा एक्सिस क्या है, फिर हम बोल सकते हैं mr² है, हाफ mr² है। नहीं भी हो सकता है, हम 2-4 प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे mr² नहीं है यार, फिर क्या कर लोगे? फिर तो एक्सिस चेंज करते ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखते हैं ये रिंग का प्रॉब्लम देखते हैं। एक रिंग लेते हैं जिसका थिकनेस जो है बहुत ही कम है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि थिकनेस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका थिकनेस इज़ वेरी वेरी लेस। ओके, बहुत ही कम थिकनेस है एक रिंग का। ऑलराइट, okay, this is a ring having a very small thickness, and let us take an axis. हाँ, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग लेते हैं, फिर आई विल टेक अदर एक्सिस। Alright, so I want to calculate the moment of inertia of a ring having a very small thickness. A ring having a very small thickness, radius r. तो ये जो रेडियस है ये है आपका r, and again linear mass density lambda, and mass is equal to m. Mass is equal to m.
Okay, about an axis, we can say perpendicular to the plane of the ring, perpendicular to the plane of the ring and passing through its geometrical center, passing through its center, ठीक है, having very small thickness, passing through its center. Okay, linear mass density, uniform density, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है. सो नाउ, सो टू कैलकुलेट इट, फर्स्ट वी टेक अ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट, we take a very small area element, or suppose an element here. Okay, and let's suppose this element has some kind of a thickness, okay, ds. ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ because it is an arc of a circle. Okay, it's an arc of a circle. ठीक है. You have a ring having mass capital M, radius r, uniform linear mass density lambda, and I take a very small element having some kind of a length ds. That's how I have formulated the problem. Now, what is lambda? Lambda is equal to total mass divided by Length. 2 pi r, length. Okay, and it is also equal to if it is uniform mass density, then lambda is equal to whatever is the mass element of this mass, इसका जो भी मास एलिमेंट है, इसका जो भी मास है एलिमेंट का, dm अपॉन ds. ओके, सो आई कैन से दैट dm इज इक्वल टू लैम्डा ds, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन 2 pi r ds. इट्स वेरी इजी. ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay, so now moment of inertia of dm about, इसको let's suppose इसको बोलते हैं z axis. Okay, z axis about z axis कितना होगा? Using r square dm. dm r square होगा ना? Yes, by definition of moment Yes, of inertia. yes, yes. By definition of what moment of inertia is. Therefore, moment of inertia of m about z axis is iz is equal to integration of dm r square. So जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे dm is equal to m upon 2 pi r ds, m r square upon 2 pi r ds. So ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? With respect to the linear length, sorry, the circumference. Okay, तो circumference के respect में हो रहा है, ठीक है. It is happening with respect to the circumference. With respect to the circumference. So circumference के respect में होगा, तो ये इसको लिख सकते हैं m r upon 2 pi integration ds from 0 to 2 pi r, है ना. So this simply becomes m r upon 2 pi, यहाँ पे आ जाएगा 2 pi r. So आपका 2 pi गया कैंसिल, and you are left with iz is equal to m r square. ठीक है. Okay, this is about an axis perpendicular to plane of ring and passing through center. This is clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Integrate over circumference. ठीक है, we are integrating over the circumference. Integrate over the circumference. So the entire circumference is created by a large number of small elements. So therefore I've integrated over the circumference. Okay. Now this is with respect to an axis perpendicular to the plane. What if I take an axis passing through the plane? Let's suppose a diameter. Okay. Now let's go to the next problem. This is point number 1. Okay. Let's suppose I take moment of inertia of ring with respect to an axis
passing through its diameter. Passing through diameter of ring. ये कितना होगा, कोई बता सकता है? mr square by 2. mr square over 2 इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? परपेंडिकुलर एक्सिस। एक्स वाई में सेम होगा ना सिमेट्री की वजह से, यस, वेरी गुड। और सिमेट्रिसिटी लगा देंगे ना उसमें। यस, वेरी गुड। सो ये हो गया आपका रिंग, ऑलराइट। और रिंग के रेस्पेक्ट में आई मेजर दिस इज द डायमीटर, ओके। नाउ लेट्स सपोज मैं इसको ब्लैक कलर में बनाता हूँ। दिस इज द डायमीटर, ओके। दिस इज अनदर डायमीटर एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, जो अभी मैंने बताया था, जेड एक्सिस। Okay, let's suppose this is x axis, this is y axis. Okay, so if you already know that the moment of inertia with respect to the z axis is equal to mr square, now x and y lie on the plane of ring. Z axis is perpendicular to plane of ring, so I can apply the perpendicular axis theorem to say that the moment of inertia with respect to an axis of a ring perpendicular plane is equal to the moment of inertia with respect to two perpendicular axes lying on the plane, intersecting at the point where the axis is passing through the ring, that is the center. So this is nothing but mr square is equal to ix plus iy. यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल सकते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन is symmetric with respect to the x and y axis, है ना। with respect to the x axis mass distribution जैसा है, with respect to the y axis भी mass distribution वैसा ही है। there is no difference in the distribution of the mass with respect to x and y axis. therefore the moment of inertia with respect to x and y axis are going to be the same. so ix is equal to iy, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2ix या फिर 2iy. सो आई कैन से ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर. क्लियर? यस सर। Yes, sir. जो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द बोथ द x एंड द y एक्सिस, ओके। देयरफॉर ix इज इक्वल टू iy. मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मास के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो इफ विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस द एंटायर मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, देन देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी सिमेट्रिक. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If I tell you that 3a and 3b, find out the moment of inertia of a disk of a ring with respect to an axis which is tangent to the ring but lying on the plane of the ring, with respect to an axis which is tangent to the ring but perpendicular to the plane of the ring. Can you calculate their moment of inertias? 3/2 mr पर सर पहले वाले का आएगा 3/2 स्क्वायर और दूसरे का 2mr स्क्वायर. 2 mr. Okay. ठीक है, you are understanding the question? You have the ring, but on one hand about सारे लोग प्लीज कैलकुलेट करो इसको खुद से. अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू रिंग बट
lying on plane of ring. ठीक है, यहाँ पे है about an axis perpendicular to plane of ring and passing through its circumference. सब लोगों ने कर लिया, आई नो दैट 2-3 बच्चों ने कर लिया, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? इज एवरीबॉडी फॉलो? दूसरे का 2m² बेटा क्लास में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, आइदर यू कैन राइट इट इन द चैट सेक्शन और यू कैन आस्क डायरेक्टली. ओके, यस सर डन. ओके, यहाँ पे वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. I is equal to, and we can apply with respect to ICM, and we can say I is equal to ICM plus m r square. यहाँ पे also we can apply parallel axis theorem. And I can say I is equal to ICM plus mr square. तो यहाँ पे ICM is how much? half mr square plus mr square. यहाँ पे ICM is how much? mr square plus mr square. So this is equal to 2 plus 1 3 by 2 mr square and this is equal to 2 mr square. 2 m². ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे मोस्टली. They are not going to ask you straightforward questions. So these kind of questions they will ask. So first you calculate what is the moment of inertia with respect to some standard axis, and then you sort of calculate the moment of inertia with respect to various other axes. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं ये बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई कैलकुलेट कर सकता है? बेटा म्यूट कर लो. अरे राहुल, म्यूट योरसेल्फ यार. हाँ, कोई मुझे बता सकता है कि क्या कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस? The angle is 45 degree. लेट्स सपोज 45 डिग्री. फिर सर ये भी होमवर्क क्या कर पाओगे ये बताओ मुझे क्लास में. सर रूट अंडर आई एक्स स्क्वायर प्लस आई जेड स्क्वायर कर दे क्या? क्यों? ऑन व्हाट बेसिस? सर की वेक्टर जैसा लगता है मुझे. ले सकते हैं. Resultant है type of. बट हाँ सर सर, ऐसे कर लेते हैं ना, पैरेलल वाला निकालते हैं उसके बाद बीच वाला निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि मतलब ये क्या बोलते हैं, डायमीटर के थ्रू जो जा रहा है उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और उसके पैरेलल जो जा रहा है उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उनको रूट करके निकाल लें उसका सेंटर. ऐसा चलेगा सर? ऑन व्हाट बेसिस वो चलेगा? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है? हाउ डू यू नो दैट? हाँ ये पूछ रहे हैं सर, तो करता है क्या सर? इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर? हाँ सर, यस सर, यस सर. यस सर. इंटीग्रल हमारे स्क्वायर लिखते हैं ना सर, आर तो वेक्टर है ना? नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आई वेक्टर. नो किसने बोला? नहीं, नो किसने बोला? नहीं, मैंने तो नो नहीं बोला सर, मैं तो यस. हाँ मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो. नो किसने बोला? सर मैंने बोला नो. नहीं, हाँ बताओ. हाँ तो क्या नो क्यों है बताओ? वेक्टर क्यों नहीं है? क्या है फिर? स्केलर है? स्केलर ही होगा. एक लड़की ने भी बोला अभी थोड़ी देर पहले. यस सर. हाँ, नो मतलब व्हाट डू यू थिंक? सर आर तो डिस्टेंस है ना एक्सिस से. हाँ तो रूट 2 mr square आएगा ना इसको. और सर मास भी स्केलर है सर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर यू आर सेइंग? यस सर. सर ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है. प्रियंका, हाँ प्रियंका, ना तो स्केलर है. स्क्वायर हो गया ना. एक सेकंड, वन बाय वन. प्रियंका, ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, तो फिर क्या है? सर टेंसर क्वांटिटी. Who is saying this? Priyanshu and Priyanka are saying tensor. What is a tensor? Sir, I don't know much about it now. Okay. ठीक है, मैं थोड़ा सा तुमको हिंट दे करके छोड़ रहा हूँ. This is a discussion that you will probably have in third year maybe.
Moment of inertia is neither a vector, neither is it a scalar. It's a tensor quantity. What is a सर वो tensor? प्लेनर और स्पेशियल मूवमेंट के हिसाब से होता है उसमें। ये इलेक्ट्रिक करंट के जैसा नहीं सर? नहीं टेंसर क्वांटिटी नहीं। तो बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर, हम कुछ कुछ स्पेसिफिक सिमेट्रिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है लेकिन वो आपको नहीं मालूम है। फॉर दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टेंसर्स वर्क एंड देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड सम अदर थिंग्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। हाँ सर, तो इससे पहले फिर आपने वो डायगोनल वाला क्वेश्चन दिया, उसमें भी कुछ ऐसा आ रहा है क्या? उसमें किसी ने मुझे बताया कि ट्रायंगल लेके कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट विल वर्क, है ना। somebody said सर, कि ट्रायंगल मैंने लेकर के आप उसमें- कर सकते हो। हाँ हाँ सर। तो सर उसको मैंने हम सोचा है। बिना उसके नहीं कर पाएंगे क्या? क्या चीज़? अच्छा सर, वैसे मेरा लॉजिक ये नहीं था कि मैं वेक्टर के फॉर्म में इसको इक्वेट, मैं तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से बता रहा था कि अगर आई ये परपेंडिकुलर का ये है, हाइपोटेनस का ये है, बेस का ये, तो हाइपोटेनस का ये हो जाएगा। मैं तो ऐसे सोच के बता रहा था। लेकिन वो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे उस तरह का आप एडिशन अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो मैं तो उससे भी अलग था सर, मैं तो कंपोनेंट देख रहा था। कंपोनेंट देखने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स अ वेक्टर, है ना। यस सर। हाँ, तो इज इट अ वेक्टर? इट्स नॉट अ वेक्टर नो एक्चुअली। सर। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू स्ट्रोक योर क्यूरियोसिटी अ लिटिल बिट, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट इन इट सेल्फ कम्प्लीट। आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे या मास्टर्स में जाएंगे तब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के बारे में पढ़ेंगे, और उन केसेस में आप कुछ और चीज़ें सीखेंगे कि इस तरह का जो एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी सब्जेक्ट। ओके, हम जो अभी कर रहे हैं वी आर जस्ट डूइंग एन इंट्रोडक्शन टू सर्टन वेरी स्पेसिफिक एक्सिस, परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल। द मोमेंट यू टेक इट एन इनक्लाइन डायरेक्शन, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जस्ट टू कीप द डिस्कशन ओपन, आप अगर चाहें तो इसके बारे में खुद से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्टडी अबाउट इट अ लिटिल बिट इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट डायग्राम में। ओके, 11 मिनट में हो जाएगा कि कितना टाइम हो गया? 2:49 हो गया। अरे बहुत जल्दी टाइम निकल गया यार। यस सर, मुझे तो और भी बहुत कुछ करना था, मुझे तो सिलेंडर भी करना था, बहुत कुछ करना था। क्या 3 बजे? नहीं सर, बस सर सर आप करवा दो सर अभी। 3 बजे तक ही लगाना सर। अच्छा, आप बहुत डिमोरलाइज्ड साउंड कर रहे हो। वो सर नहीं सर, डिबेट में बैटरी नहीं है सर। ठीक है बेटा, छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल मिलोगे ना? बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, कल एक से 3। कल तो कोई डिबेट नहीं है ना 1 से 3 Yes, के बीच? नो सर, नो सर। कल प्रेजेंटेशन है तो 1 से 3 बजे फ्री कल नहीं हो जाएंगे आप तो लोग? सर। नो सर, 3 बजे से हुए। सर सर 1 से 3 फ्री है सर। कल थोड़ी शाम को कर। ठीक है, तो कल भी 1 से 3 बजे क्लास रख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर, डन। ओके सर। ठीक है, तो 11 मिनट में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। रिंग ऑफ कंसिडरेबल विथ, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिंग है बट ऑफ कंसिडरेबल विथ, मतलब इसका जो विथ है वो छोटा नहीं है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वट एवर दिस डिस्टेंस इज, इसकी मोटाई है सर थोड़ी। हाँ, मतलब ये जो डिस्टेंस है इट इज़ नॉट वेरी स्मॉल, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट लार्ज, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट दैट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो लेट्स सपोज आपके पास एक रिंग है, okay, let's suppose we have something like this, and I want to calculate it with respect to an axis which is let's suppose axis which is diameter of this ring. Okay, डायमीटर के रेस्पेक्ट में मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ. सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू हैव.
Okay, so let's suppose this is R1, this is R1, and this is R2. This is R2. So inner diameter, inner radius is equal to R1, and outer radius is equal to R2. Okay, so now I want to calculate what is the moment of inertia with respect to its diameter. So what can I do is, मैं इसको imagine कर सकता हूँ that there are large number of rings. I calculate the moment of inertia of this ring, I calculate the moment of inertia of this ring, I calculate the moment of inertia of this ring, I calculate the moment of inertia with this ring, and on with respect to this axis. कर सकता हूँ ना? And then I can integrate for all of these. Yes. Yes, sir. Yes, sir. I can divide the entire this thing into small rings having a very small width. So मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ that I can consider a very particular ring here at a particular distance r having very small thickness, और फिर मैं उसको calculate कर सकता हूँ. ठीक है. So if I want to calculate, let's suppose, the moment of inertia of any very specific ring, let's suppose di, with respect to the diameter. Okay, this is the diameter. Okay, so let's suppose this is d, लिख देता हूँ मैं उसको, diameter. So this is equal to half dm r square if the distance is r. If let's suppose some fixed distance is r या x के टर्म्स पे लिख सकता हूँ. ठीक है. The moment of inertia of a very small ring at a distance r having mass dm is this much. This is fine with respect to diameter. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let's suppose that there is some kind of a surface density, uniform surface density sigma. Then we can say that sigma is equal to mass times area. Mass times area. It's not a strip, it's a surface. So mass times area. So area is equal to, so what is area? Now that I have to calculate. What is the area of this? Can anybody tell me? So pi r2 square minus r1 square. Pi r2 square minus r1 square. The area of this is pi r2 square minus pi r1 square. So this is equal to pi r2 square minus r1 square. So this is the area. So यहाँ पे हम इसको further calculate कर सकते हैं, that we can they say that sigma is equal to dm upon dA. Okay, dm upon dA. So where dA is equal to pi r square dr. Okay, pi r square dr if this is dr. Okay, pi r square dr करके लिख सकते हैं. ठीक है. So from here I can conclude that for the moment of inertia with respect to the diameter is simply equal to half dm r square, which is nothing but equal to half dm is equal to r square sigma dA, which is equal to integration of half r square sigma is equal to m upon a, which is equal, dA is equal to pi r square dr. Quite simple. So this is equal to integration of half r square m upon pi r2 square minus r1 square. So pi r square dr. तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी? माइनस आर से नहीं, सॉरी, यहाँ होगा r1 से r2 तक. r1 से r2 तक. जी सर, r1 से r2. r1 से r2. So this is id is equal to, so take the constants out, m upon pi आपका कैंसिल हो गया, m upon 2
r2 square minus r1 square, integration from r1 to r2, it becomes r to the power 4 dr, है ना? सर ये डी पाई आर स्क्वायर डी आर क्यों है? What is the area of this? This is रेडियस क्या है, ये r है, तो इसका लेंथ क्या हुआ 2 पाई r हुआ, और इसका जो थिकनेस है वो dr हुआ, तो इसका एरिया कितना हुआ 2 पाई r dr हुआ ना? सॉरी नॉट 2 पाई r, नॉट पाई r स्क्वायर, इज 2 पाई r, आई थिंक इट्स 2 पाई r, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे. This is 2 pi r dr. Thank you. This is 2 pi r dr. This is the area of ring cross section. Okay. So this is यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 pi r dr. 2 pi r dr. Pi gets cancelled. 2 gets cancelled. So ये आपका हो गया r cube. So this is equal to m upon r2 square minus r1 square, so this is equal to into 1 upon 4 r to the power 4 r1 to r2, so this is equal to m upon r2 square minus r1 square into 1 upon 4 r2 to the power 4 minus r1 to the power 4. so इसको लिख सकते हैं m upon r2 square minus r1 square 4 into r square minus r2 square minus r1 square into r2 square plus r1 square. तो ये हो गया आपका कैंसिल, which comes out to be, or id is equal to 1 upon 4 m r1 square plus r2 square. This is your answer. सर जल्दी से अटेंडेंस ले लीजिए, डिबेट शुरू हो गया सर. एक सेकेंड, जस्ट मैं तुमको थोड़ा सा 1-2 होमवर्क दे देता हूँ. आप एक चीज़ और ट्राई करना, जब r1 इज इक्वल टू r2 तब क्या होता है ये फाइंड आउट करो, जब r1 इज इक्वल टू 0 तब क्या होता है ये फाइंड आउट करो. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. Alright, I have taken your attendance. Yeah, you can go attend the debate. Tomorrow there is a class at 1 to 3. Okay, same timings. Have a nice day, guys. 2 hours. 2 hours. 2 hours. 2 hours. सर. Yes. सर वो जो रेक्टेंगुलर का डायगोनल से आप दिए हैं ना, हाँ, तो हम लोग उसको एक और तरीका से बना सकते हैं क्या? अगर कोई रेक्टेंगल है और उसके पैरेलल कोई लाइन है साइड के पैरेलल जो सेंटर से पास करता है, मतलब उस एक्स वाई प्लेन में, तो उसके अबाउट भी तो मास डिस्ट्रीब्यूशन उसका हाफ एंड हाफ है, और वो जो आप डायगोनल है तो डायगोनल के अबाउट भी उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हाफ एंड हाफ है, तो दोनों के अबाउट सेम बोल सकते हैं क्या? मास हाफ है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है ना. इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगल. ये आपका रेक्टेंगल सर जो दोनों डायगोनल रेक्टेंगल करे, ये आपका डायगोनल हो गया. और सर एक दूसरा डायगोनल भी होगा. ले लिया बेटा, आप जा सकते हो. ओके, थैंक यू सर. लिंक भेज देना, लिंक डिबेट का. लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप, या थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए. नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो कैसे अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? सर अगर स्क्वायर रहे तो स्क्वायर में कर सकते हैं. हाँ, स्क्वायर में कर सकते हैं. रेक्टेंगल में कैसे करोगे? सोचने वाली बात है. ठीक है, आप लोग आज फिर अटेंड करो आपके प्रोग्राम्स, है ना, एंड